everyone, my name is Rahul Chaubey. In this video lecture, we are going to solve the problem statement 2. So let me first open my Word where my problem statement is written. So yes, this is my Word document. In this, the problem statement which we have to solve today is write a program in C to calculate and print the electricity bill where the unit consumed by the user is given from test case. It prints the total amount the user has to pay. The charges are as follows. So these are units and these are the charges that the user has to pay per unit. So if the user has consumed up to 199 units, then the user has to pay 1.20 rupees per unit. If the user has consumed 200 and above but less than 400 units, means up to 399 units, then the user has to pay 1.5 rupees per unit. And if the user has consumed 400 and above but less than 600 units, means up to 599 units, then the user has to pay 1.8 rupees per unit. And if the user has consumed 600 and above, means around 900 or 1200 units, then the user has to pay 2 rupees per unit. And other than this, these are the loops which are given to us. Means if bill exceed rupees 400, then surcharge of 15% will be charged, right? So this is the first condition which is given to us, and the next condition is the minimum bill should be of rupees 100. So this is the second condition, right? So अगर हमारा जो बिल है वो 400 से ऊपर गया तो उसमें surcharge of rupees 15% भी ऐड होगा, but and the next condition is जो हमारा minimum bill है that should be of rupees 100. So let us code this theory. For that, let me open my Dev C++ IDE. So this is my IDE. I will press Ctrl N for new window, and let me just open this problem statement again in my half screen. So सबसे पहले वही library which is #include iostream, and then using namespace std, and then I will write my main function. So this is my main function. Now for solving this problem, I need to declare some variables. So I am declaring my first variable as units. Units मुझे चाहिए कि कितने units consume हुए. Second is amount, कितना मुझे pay करना है, right? तो ये दो initially मैंने ये दो variables initialize किए हैं, and the units I need to take the units from the user. So for that, I will first print the cout statement on the console that enter the unit consumption, and then the user will enter the unit consumption, and here I will, and that the user's entered value will go and store in this units variable. So units variable, I have specified that it will go and store in this units variable. तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन हमको क्या दी है कि अगर हमारा जो यूनिट कन्वर्जन है दैट इज अप टू 199, तो हमारा जो चार्जेस होगा दैट विल बी अराउंड 1.2 रुपीज पर यूनिट. सो फॉर दैट आई विल राइट माई इफ कंडीशन दैट इफ यूनिट्स इज लेस देन 200, then my amount to be paid is equals to amount into 1.20, right? And for the next condition I will write the else if condition, else if block again, and in my else if block I will write that if my unit is greater than or equal to 200, and I'll use AND operator here. I will tell you why. And my units is less than 400.
then my amount to be paid should be equals to amount into 1.50, right? Now for another condition, I will again write my else if block, and I will write if my units is greater than yes, it's greater than equals to 400 and my units is less than 600, then the amount which I need to pay is equals to amount equals to amount into 1.80, right? And in the last, I will write the else block. In my else block, the condition will contain that if my unit consumption is 600 and above, then then the amount I need to pay is amount is equals to units into 2.0. Here every here in place of amount we'll write units, sorry, units, right? So this is my else block. Now we have written these conditions, means up to 199, 200 and above, 400 and above, 600 and above. We have written these conditions. Now we need to write the code for this condition, that if bill exceed rupees 400, then surcharge of 15% will be charged, right? So for this, I will again write one if statement, that if my amount is greater than 400, then let us take another variable, which is net amount. Net amount is equals to amount plus amount into 0.15. If we will take the percentage value of 15%, then 15 upon 100, which is 0.15, right? And in my I will write again the next block, which is else if block, and in this I will write another condition, that if my amount is less than 100, then in that case my net amount will be is equals to 100, right? Now I will print my amount. I'll print my net amount. राइट यहाँ पे एक गलती है कि हम लोगों को नेट अमाउंट तो सिर्फ तब मिलेगा जब हमारा जो अमाउंट है दैट इज ग्रेटर देन 400 एंड और लेस देन 400 और लेस देन 100, सॉरी, बट इफ आवर अमाउंट इज बिटवीन 100 एंड 400 तो हमें नेट अमाउंट नहीं मिलेगा. तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में जो भी हमारा आउटपुट होगा दैट विल बी आवर अमाउंट. So here we will write one more if else condition, that if amount is equals to is less than 100 or amount is greater than 400, then in that case what I will print, C out net amount, right? Else C out amount, right? तो ये हमने एक कंडीशन लिखी. तो इस कोड को पूरा समझते हैं ऊपर से. सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, क्या क्या, यूनिट्स एंड अमाउंट. तो यहाँ पे हमको एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, नेट अमाउंट, राइट? तो हमने सबसे पहले यहाँ पे तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, यूनिट्स, अमाउंट एंड नेट अमाउंट. सबसे पहले हमने इस यूनिट्स में यूजर से इनपुट लिया कि हमें कितना यूनिट्स कंजम्पशन हुआ है. तो इसमें हमने यूनिट्स का इनपुट लिया यूजर से,
एंड देन वी हैव चेक दीज कंडीशंस कि अप टू 199, तो इन सब के लिए हमने यहाँ तक कोड लिखा, यहाँ तक कि 600 एंड अबव तक है, तो फिर हमारा जो अमाउंट होगा दैट विल बी यूनिट्स इनटू 2 रुपीज। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है कि इफ बिल एक्सीड्स रुपीज 400 देन आवर सरचार्ज ऑफ 15% विल बी चार्ज ऑन आवर अमाउंट। ठीक है, तो जितना भी अमाउंट होगा उस पर 15% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा अगर हमारा अमाउंट जो है वो 400 से ऊपर है। So for that we have written another condition that if our amount is greater than 400 then our net amount will be equals to amount plus 15% of our amount, right? Else if we have written another condition that if our amount is less than 100 then our net amount will be equals to 100। ठीक है, अगर हमारा जो अमाउंट है वो लेस देन 100 है तो हमारा जो नेट अमाउंट होगा वो 100 होगा। अब ये जो नेट अमाउंट है ये प्रिंट हो रहा है सिर्फ दो ही कंडीशन में। कौन कौन सी दो कंडीशन है? या तो हमारा अगर अमाउंट है वो 400 से ज़्यादा है या हमारा जो अमाउंट है वो 100 से कम है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा अमाउंट 100 और 400 के बीच में लाई कर रहा है तो हम लोग, तो उस केस में तो नेट अमाउंट है नहीं हमारे पास, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमने जो भी हमारा अमाउंट हमने ऊपर कैलकुलेट किया था इन कंडीशंस में कि अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट इनटू 1.20, अमाउंट इक्वल्स टू यूनिट्स इनटू 1.20, हियर आल्सो वी विल राइट यूनिट्स, सॉरी, राइट। तो उस केस में क्या करो, उस केस में हमें अमाउंट प्रिंट कर दो। और अगर हमारा जो ये दो केसेस हैं कि अगर ये हमने और ऑपरेटर यूज किया है, यहाँ हम लोगों ने एंड ऑपरेटर यूज किया है, यहाँ हमने और ऑपरेटर यूज किया है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एंड ऑपरेटर जब भी हम लोग यूज करते हैं तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, और अगर हमने और ऑपरेटर यूज किया है तो या तो ये वाली या ये वाली, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, राइट। So I hope you have understood the difference between these two, that why we use this AND operator and why we use this OR operator, right? So let us run this code. So for that I will directly press F11 and here I will save my program by name elect bill dot cpp. So here it is shown that 0 errors are there. Then I will write the यूनिट कंजम्पशन। तो यूनिट कंजम्पशन हमारे पास जो टेस्ट केसेस है उनमें सबसे पहला जो टेस्ट केस है दैट इज 50 यूनिट्स। तो 50 यूनिट्स में हम लोग के पास आ गया भाई 100। क्यों? क्योंकि 50 यूनिट्स जो है वो हमारा बिलो 199 यूनिट्स है, तो 199 यूनिट से बिलो है, यानी कि अगर 1.2 रुपीज लग रहा है एक यूनिट का तो 50 यूनिट्स का कितना हो जाएगा? 50 यूनिट्स का हो जाएगा 60 रुपीज। तो 60 रुपीज इज लेस देन 100। तो लेस देन 100 के केस में उसने क्या किया, हमने जो कंडीशन यहाँ पे लगाई थी कि वो हमें 100 प्रिंट करके देगा, क्योंकि मिनिमम अमाउंट जो है हमारा वो 100 होना चाहिए मिनिमम बिल। तो 100 अमाउंट आ गया हमारे पास टू बी पेड, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे। हमने यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट केस लिया, तो नेक्स्ट टेस्ट केस में हमारे पास आया 300। तो 300 हमने प्रिंट किया तो यहाँ आया 517। यहाँ हमने एक प्रॉब्लम और फेस कर रहे हैं कि हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए दैट शुड बी 517.50, बट यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 300 आ रहा है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 517, राइट। तो 517 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो डेटा टाइप लिया है वो हमने इंट लिया है। इसको अगर हम लोग फ्लोट ले लेंगे तो लेट मी चेक दैट इफ इट इज गिविंग अस द सेम आउटपुट और नॉट। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 300 लिया तो यस 517.5 आ रहा है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आउटपुट है वो हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद है, डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास दो और जीरोस आ रहे हैं, यानी 2 डिजिट्स आ रही हैं। इसके बाद भी 2 डिजिट्स, इसके बाद भी 2 डिजिट्स। तो हमारे पास 2 डिजिट्स आने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? एक ही डिजिट आ रहा है। और अगर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट केस चेक करें कि यहाँ हमारे पास 500 यूनिट कंजम्पशन के लिए कितना आ रहा है, तो 1035 आ रहा है, जबकि हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए? 1035.00 आना चाहिए। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इस सी आउट स्टेटमेंट की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? वी विल राइट प्रिंट एफ।
जो हमारा सी का कोड था, क्योंकि सी का कोड हम लोग सी प्लस प्लस में अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे %.2f, यानी कि जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक जाओ, और यहाँ हम लोग प्रिंट कर देंगे नेट अमाउंट, राइट। और वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ, उसमें हम लोग ने यहाँ पे %.2f, और जो अमाउंट हमें प्रिंट करना है यहाँ पे, तो अमाउंट हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया एल्स। यस, तो अब अगर हम लोग इस कोड को रन करेंगे, तो लेट मी चेक फॉर द इनपुट्स फर्स्ट। तो पहला इनपुट था हमारा 50, 100.00 आ रहा है, 100.00 शुड बी द आउटपुट, सो आवर आउटपुट इज सेम। नेक्स्ट जो आउटपुट है हमारे पास, नेक्स्ट जो इनपुट है हमारे पास, दैट इज 300। तो 300 अगर हमने इनपुट दिया यहाँ पे, तो हमारे पास आया 517.50, और 517.50 शुड बी आवर आउटपुट, सो आवर आउटपुट हैज मैच्ड। नाउ लेट मी चेक फॉर अदर टेस्ट केसेस, और नेक्स्ट टेस्ट केसेस ऑफ 500 units, तो 1035.00 should be our output, and here this is our output, so our output is same, right? Now let us check for other 3 test cases. Next test case is 700 में 1610.00 आ रहा है हमारे पास, और आउटपुट में भी 1610.00 आ रहा है, तो ये हमने चेक किया। नेक्स्ट अगेन अगर हम लोग F10 प्रेस करेंगे, और नेक्स्ट टेस्ट केस इज 80 यूनिट्स, सो 80 यूनिट्स हम लोगों ने चेक किया, यहाँ पे आया 100 क्यों है, क्योंकि 12 8 96 होता है, तो 96 भी रुपीज भी हमारा 100 से कम है, तो मिनिमम जो बिल हमारे पास आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 100 रुपीज का। हमारे पास तो 96 का नहीं आके 100 रुपीज का बिल आया हमारे पास, राइट। और लास्ट टेस्ट केस बचा है हमारे पास 200 का, तो हम लोगों ने 200 के लिए और चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 200 में 300.00 आ रहा है, तो 300.00 शुड बी आवर आउटपुट। तो यस, जो हमारा कोड है वो हमारे टेस्ट केसेस के लिए परफेक्टली बना है। तो इतने सारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करने से अच्छा है हम लोग स्विच केसेस भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने स्विच केस अभी पढ़ाया नहीं है, तो we'll solve this question by using if else condition only. So this was the code for our second problem statement. In the next lecture we are going to solve our third problem statement. So stay tuned and thanks for watching. Thank you.